Hello everyone, welcome to Edukripa. In the last video, we have solved the first 10 questions of exercise 13a section and midpoint formula. Now, for continuation, we are going to solve the question number 11 from the same exercise 13a. Now, the students who have not solved till question number 10, they can go through the previous videos. 11th question says that the point P, see the figure, that point P 5 minus 4. So, this is the point P which is given by 5 minus 4 is डिवाइडिंग द लाइन इन द रेशियो 2:5 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। यहाँ पे ये ध्यान देना है, देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या ध्यान दो, इस फिगर में देखो। सो दिस इज द एक्स एक्सिस राइट, और ये वाई एक्सिस है, ये लाइन सेगमेंट है जो डिवाइड कर रहा है। नाउ एनी पॉइंट वी हैव सीन दैट एनी पॉइंट और ए लाइन विच इज डिवाइडिंग ऑन एक्स एक्सिस, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x, 0। ओके, बिकॉज for a point on x axis its y coordinate is always 0, so it becomes x, 0। और point B किस पे है? It is on y axis, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, y, because a point on y axis is given by its x coordinate becomes 0, so it is given by 0, y। ठीक है, now we have got the coordinates of a and b which is x, 0 and b का हो गया 0, y। now you have to find the line segment AB। देखो यहाँ पे AB दिया हुआ है, means it is from A to B, और दिया हुआ है कि AP is smaller than BP, that means the ratio which is 2:5, fine, उसमें AP होगा 2 और BP होगा 5, करेक्ट। डू नॉट मिस्टेक, उसको 5:2 मत लेना, फिर गलत हो जाएगा, आंसर रॉन्ग आएगा। डू नॉट चेंज इट टू 5:2, आंसर रॉन्ग आएगा। यू सी व्हाट इज गिवन, इट सेज लाइन सेगमेंट AB और AP स्मॉलर है, सो स्मॉलर मींस इट विल टेक द स्मॉलर रेशियो व्हिच इज 2, और लार्जर है तो लार्जर रेशियो लेगा, दैट इज 5। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला फॉर कोऑर्डिनेट A। ऑफ पॉइंट A क्या है? y we know, we have to find the x का फॉर्मूला क्या होता है? सेक्शन फॉर्मूला यूज करो, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। यहाँ पे स्लाइड डिफरेंस है, यहाँ पे x क्या होगा? x विल बी द पॉइंट P का कोऑर्डिनेट विच इज 5। ठीक है, फॉर लाइक हम निकाल रहे हैं a का कोऑर्डिनेट बिकॉज वी हैव a एक लाइन सेगमेंट है विच इज एट द एंड, बट सेक्शन फॉर्मूला हम इस मिडिल पॉइंट का, मतलब जो पॉइंट बीच में होता है उसका कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो द सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके वी विल राइट x as 5, m1 will be how much? m1 will be 2, x2 will be 0 plus m2 will be 5, x1 will be x by m1 plus m2, that is 2 plus 5. So this is 5 is equal to 0 plus 5x means it's 5x by 7, cross multiply karo, we will get 5x is equal to 35 and x is equal to 35 by 5 which is 7। okay, so point x कितना निकला हमारा? 7, that is coordinate of P of A, sorry, the coordinate of A would be how much? Coordinate of A would be x, 0. So x, 0 is 7, 0। ठीक है, ये फर्स्ट आंसर हो गया। नाउ वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ B, सेम बट फॉर B वी नीड y, तो we'll use the y formula। so y is equal to m1 y2 plus m2 y1 by m1 plus m2। m2 is how much? sorry, y is how much? y is -4, -4, m1 हो गया 2, y2 हो गया y plus m2 है 5 and y1 is 0 by 2 plus 5, so -4 is equal to 2y by 7, so -28 is equal to 2y। similarly y will be -28 by 2 which is -14। y आ गया, तो therefore coordinate of B क्या होगा? coordinate of B is 0, y, so 0, y is 0, -14। fine, so that is the second answer। so these two are the coordinates of A and B, hope you have understood। fine, now let's move on to the next question। find the coordinates of the points of trisection। now points of trisection
वाला क्वेश्चन इज सिमिलर टू द पॉइंट्स दैट हम लोग सॉल्व किए थे पॉइंट्स फॉर 5 पॉइंट, जो 5 इक्वल पॉइंट्स को डिवाइड करता था लास्ट प्रीवियस क्वेश्चंस में. यू कैन रेफर दैट आल्सो और इसको जल्दी सॉल्व कर सकते हो. So points of trisection let's take. So let it a point A whose coordinate is -30 और एक point है B whose coordinate is 6,6. Right? Now these two points are divided by trisection, means it is divided into 3 equal parts. So let one point be P, other is Q. ठीक है? So when the number of parts are 3, so the points would be 1 lesser than that. That is the 2 points you have to take. When the number of points was equal points for 5, the points to be taken was 1 less than 5, that is 4. अब क्या है यहाँ पे, all will be in the ratio of 1 1 1, so ये 1 1 1 हो गया. अब पॉइंट P के लिए निकालो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P. कोऑर्डिनेट ऑफ P, let it be x, y. use section formula. x will be how much? देखो इसको बोल रहा हूँ, ये a है -30. Point P is here, so the ratio will be 1. This side will be 1 plus 1, that is 2, and B will be 6,6. Right? So now this is M1. So 1 into 6, that is 6, plus M2 x1. So 2 into -3 is -6 by 1 plus 2. So it is 0 by 3. So we are getting the x coordinate as 0. What will be the y coordinate? Y will be 1 into 6, that is 6, plus 2 into 0, that is 0 by 3. So it becomes 6 by 3, which is 2. That means the coordinate of P is 0,2. ठीक है? Similarly, next निकालो. Let's go for A. This is point Q and this is B. Coordinate of B is 6 6. A is -30 and Q को ले लेते हैं x y. What will be the ratio? Now it's point Q, so ratio is 1 plus 1, that is 2, and that is 1. So for point Q, x will be equal to 2 into 6, that is 12, plus 1 into -3 by 2 plus 1. So it is 12 minus 3 by 3, which is 9 by 3, that is 3. Find out y. Y will be again 2 into 6, that is 12, plus 1 into 0 by 3, which is 12 by 3, that is 4. So coordinate of Q will be 3,4. This is the answer for Q. ठीक है? We are done with the 12th question as well. Now move to the 13th. हाँ, ये क्वेश्चन है, ये एक थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझो क्या है ये. Okay, we will go a little slow in this. Let us understand the question first. It says so that the line segment joining the points this and this is trisected. So let this be a line segment. This is A, which is -5 8, and this is B, which is 10 -4. Okay, now these 2 points is trisected, मतलब इसको भी फिर वही इक्वली डिवाइड किया गया, एक पॉइंट इधर से जाएगा, एक पॉइंट इधर से जाएगा, by the coordinate axis. Now what are the coordinate axes? The coordinate axes are the x axis and the y axis. मतलब इन दोनों में से कोई एक x axis है और कोई एक y axis है. तो x axis और y axis इन दोनों लाइंस को इक्वली डिवाइड कर रहा है. जब भी इक्वली डिवाइड करता है तो रेशियो क्या होता है? फर्स्ट रेशियो लिख लेते हैं 1 1 1. Now suppose it is this point is divided by x axis. तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? What do you think? What should be the coordinate of this? If it is dividing by x axis, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x, 0. If this is divided by y axis, what will be the coordinate of it? It will be 0, y. ठीक है? That means हमें क्या प्रूव करना, शो करना, because we have to prove it. We have to prove that ये जो वैल्यू है, ये the second value 0 आना चाहिए और फर्स्ट वैल्यू कुछ एक आंसर आना चाहिए.
इस पॉइंट के लिए फर्स्ट वैल्यू 0 आना चाहिए और सेकंड वैल्यू में कुछ आंसर आना चाहिए. इफ वी कैन सेटिस्फाई दिस टू कंडीशंस देन वी कुड बी एबल टू प्रूव दैट दिस इज ट्राइसेक्टेड बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस. अब इसको आगे सॉल्व करके देखते हैं. सबसे पहले इस पॉइंट को ले लो P. ठीक है, आई एम सॉल्विंग इट डायरेक्टली, स्टेटमेंट्स नहीं लिख रहा हूं. यू कैन राइट द स्टेटमेंट्स ऑन योर ओन. फॉर पॉइंट P x का वैल्यू क्या होगा? बताओ, ये पॉइंट का वैल्यू क्या होगा? रेशियो है पॉइंट P का 1 और इधर पूरा है, दैट मींस रेशियो इज 2. ठीक है, तो दैट इज द रेशियो बिकम्स फॉर पॉइंट P रेशियो इज 1:2. x का वैल्यू निकालो. तो इट इज 1 into 10, that is 10, plus 2 into -5, that is -10, by 1 plus 2. So we are getting the x value as 0. So 0/3, that is 0, means one of the coordinate we are getting it as 0. और y क्या होगा उसी पॉइंट का निकालते हैं. y will be 1 into -4, that is -4, plus 2 into 8, that is 16/3. Okay, so that means it is 12/3, which is 4. So for one point which we have taken it as P, हमें जो पॉइंट P मिला, P का कोऑर्डिनेट क्या है? So P's coordinate is 0,4. That means it lies on which axis? बताओ कौन से एक्सिस में लाई करता है? 0,4 means its x का वैल्यू 0 है. That means it lies on y एक्सिस. ठीक है, ये y एक्सिस पे लाई करता है, राइट? Y axis. So what we have concluded is just the reverse. So this will become point P and this we have to take it point Q. It may change because that is not anything fixed. ठीक है, वो चेंज हो सकता है, वो हम लोग को सॉल्व करने के बाद देखना पड़ता है कि कौन सा क्या आ रहा है. अगर चेंज हो रहा है तो यू कैन चेंज इट. अब पॉइंट Q के लिए देखो, फॉर पॉइंट Q, ठीक है, रेशियो क्या हो जाएगा? रेशियो वुड बी 2:1. तो एक ले लो कोई भी पॉइंट. So x will be, if I am taking as 2, so 2 into 10, that is 20, plus 1 into 5, that is -5/3, which is 15/3, that is 5, and y is equal to, y क्या होगा इसका? 2 into -4, -8, plus 1 into 8, that is 8/3. So it is 0/3, which is 0. That means we getting y coordinate as 0. So Q's का coordinate क्या हो गया? Q's coordinate is 5,0. The second point is 0, which means it confirms that it's an x-axis. So hence from this two we can say that both the points of intersection, one point is 0,4 and the other point is 5,0. Both are coordinate axis. One is y-axis, other is x-axis. ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क करके सॉल्व करना. थैंक यू. विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो.